चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संपूर्ण इंजीनियरिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स किसे कहते हैं और ब्रावियस लैटिस का क्या महत्व है? इन दो सवालों के जवाब आज हम इस टॉक से ढूंढना चाहेंगे। सो लेट अस गो अहेड विथ द डिटेलिंग ऑफ दीज पार्ट्स। क्रिस्टल सिस्टम्स के पहले एक फिगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां पर 3D स्पेस में हम कैसे अरेंज करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को, वो पहले देखेंगे और फिर बाद में क्रिस्टल सिस्टम्स को डिटेल्स में पहचानेंगे। So crystal systems are the stacking of boxes, that is the space filling arrangements. So these space filling arrangements, suppose these are the z axis, this is the y axis, and this is the x axis, and any corner of your room, if you could take that arrangement, and from any of that corner, if you could see that the intersecting points of all these, they are likely to meet here at this point, we will call it as the origin. And from this origin, we are going to stack the boxes which are cubic in nature, one above the other. Adjacent to that, the same structure we are going to repeat. And by this arrangement, starting from one corner, we are going to fill the space in and around us. One by one, we will stack the boxes and we will keep the room occupied. A stage will come where we are out the door and we need to keep the last box, and the space will be filled all together with the cubic boxes. So what this arrangement is called as, this arrangement is very specific, and this arrangement is called as crystal systems. चलिए इंस्टेंस बदल देते हैं। अगर क्यूबिक बॉक्सेस के सिवा हमारे पास कुछ रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बॉक्सेस हैं जिनकी लंबाई क्यूबिक से कुछ ज्यादा है, तो ऐसे प्रिज्मिक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को हम लेकर फिर चलते हैं, एंड वी विल कीप द सेम अबव द अदर, filling the x, y and z axis simultaneously with these boxes, and we will occupy the space in and around the room. What will happen? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले चलते हैं, और पूरी जो रूम है जो खाली पड़ी थी, उस रूम को हमने भर दिया है रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बॉक्सेस से। इस बॉक्सेस की इस अरेंजमेंट से वो पूरा जो रूम है वो भर जाएगा। What this arrangement is going to be called then? This arrangement is very specific and called as crystal systems. तो जानिए अगले स्लाइड्स में से कि इसका इन्वेंशन किसने किया, क्या तरीका उसने अपनाया, चलिए देखते हैं। So these are the 7 systems which we want to go in detailing. Bravius was one of the inventor and metallographer that time who started with the geometries only, and with the mere geometric conceptualization he has given these systems called as 14 different arrangements of crystal structures. But before going to the 14 different arrangements suggested by Bravius, we will first concentrate on the crystal systems. What the various boxes that we can keep starting from the origin at one corner and stacking them one over the other and occupying and filling the space in and around us. कितने साइजेस हो सकते हैं कि जिससे हम ये पूरी की पूरी सिस्टम ऑक्युपाई कर सकें? चलिए देखते हैं। Stacking of space filling arrangement gives 7 crystal systems. What are that? The first one is cubic. The second one is tetragonal. The third one is orthorhombic in structure. The fourth one is rhombohedral. Fifth one is hexagonal. Sixth one is monoclinic. And seventh one is the triclinic. Cubic आपने समझ लिया। Cubic इतनी regular arrangement है कि जिसके sides A is equal to B is equal to C इस तरीके से आते हैं, जहां पर हर एक एंगल अल्फा, बीटा और गैमा जो कि वहां पर एंगल मौजूद है,
वो भी 90 डिग्री है. So it is a very specific and cubic structure in nature. In opposite to that, a triclinic arrangement is there. जो ट्राइक्लिनिक हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हमारे आजू बाजू में होते हैं, उन सभी पत्थरों को अगर हम देखें तो उनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है. One side goes like this, one side goes like this. It is just a abstract form which comes into picture. So triclinics are those which are still, if you keep and want to occupy the space, they will occupy. So crystal systems are 7 in nature. Cubic arrangement, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. What is tetragonal? Tetragonal, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90. Orthorhombic, A is not equal to B is not equal to C. यहां पर वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का हमने बता सकते हैं कि वहां पे A is equal to B but B is not equal to C. एक लेंथन हो रहा है बाजू, एक साइड यहां पर जो अलग थी, यहां पर हर एक साइड अलग हो रहा है ऑर्थोरोम्बिक में. जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो देखिए वहां पे एंगल चेंज हो रहा है. A is equal to B is equal to C, वहां पर क्यूबिक के जैसे साइड्स तो एक तरीके हैं, लेकिन 90 डिग्री एंगल मौजूद नहीं है. दैट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब. हेक्सागोनल में A is equal to B but B is not equal to C and alpha is equal to beta 90 degree but gamma is 120 degree. So somehow it is going to be hexagonal in nature. Monoclinic में A is not equal to B is not equal to C. Alpha is equal to gamma is equal to 90 degree which is not equal to the beta. This is the complex one, the monoclinic one. And the triclinic, it gives you A is not equal to B is not equal to C. Alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degrees. Such a complex system, triclinic, usually obtained with the rock and its arrangements of the rocks. So these are the crystal systems that we want to highlight here. With this, we will stop for a while and we will continue the session in the next topic where we will discuss about the Bravais lattice arrangements, which are 14 in nature, and that is very interesting part. So stay tuned and we are going to meet again with the session on 14 different structures of Bravais lattice. आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कृपया उसे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें. नोटिफिकेशन का भी बेल आइकॉन वहां पे है, वहां पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. Let us stop the recording.